क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है एक कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस है 4 ओम इज रिमूव्ड फ्रॉम रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की एक रीजन में से अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग नॉर्मली टू द प्लेन ऑफ द लूप। लेट्स से दिस इज द प्लेन ऑफ द लूप and now this is being removed from the region of the uniform magnetic field। इसका मतलब है there is a rate of change of magnetic flux, it's been decreasing। तो अब induced current प्रोड्यूस होगा लूप में, it varies with the time, ये आपको दे रखा है ग्राफ। तो टोटल चार्ज दैट पास थ्रू द लूप आपको फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज दैट पास थ्रू द लूप। अब टोटल चार्ज दैट पास थ्रू द लूप इस केस में इट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे, द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू द एरिया अंडर द IT ग्राफ, क्योंकि इसका जो स्लोप है दैट विल गिव आउट द चार्ज एट एनी इंस्टेंट फ्लोइंग एट एनी इंस्टेंट। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया अंडर द IT graph which is the area of a triangle। So this area under this IT graph is the area of this triangle, which is half into base into height। So base is given by the time axis 0.6 है value, और height is given by the current axis which is 0.3 ampere। तो ये value मैंने डाली। 0.09 coulomb is the total charge that is equal to the area under the current time graph which is the area of the triangle। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें जो है वो आपको फाइंड करना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप के लिए जो रिलेशन है, अब ये रिलेशन कैसे आई, रिलेशन बिटवीन द इंड्यूस चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय दिस, ये आपका फॉर्मूला है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस वी गेट दिस रिलेशन। नाउ हाउ डू वी गेट दिस रिलेशन, वी नो दैट जो इंड्यूस्ड करंट है दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF बाय द रेजिस्टेंस। नाउ induced EMF is the rate of change of flux। अब ये 1/r आ गया इधर। Now this current is the rate of change of the charge dq by dt which is equal to 1/r into rate of change of flux by dt। okay, ये cancel हो जाएगा, तो this dq is equal to 1/r into d5। now let's integrate it on both sides। so integrating in both sides gives me 1, ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। now integrating this small charge will gives me the induced charge 1/r constant है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे जो चेंज इन द फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा Q into R। so this is how we get this relation। तो ये आपका है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंड्यूस चार्ज इनटू द रेजिस्टेंस। यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स Q आपने निकाला, चार्ज 0.09 कूलम था, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस इज गिवन 4 ओम। सो this is 4 ohm which gives me 0.36 Weber is the SI unit of the magnetic flux। okay, next आपको जो थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए अभी आपने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स इज इक्वल टू रहता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया आपको पता है चेंज इन फ्लक्स अभी आप निकाला था 0.36 वेबर। एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁴ which is equal to 720 Tesla। so 720 Tesla is the magnitude of the magnetic field in the region। so that was question number 27।